Okay, so in today's class, we will try to understand HTML plugins. Okay, so plugins are what? They are the computer programs. Okay, so which will extend the standard functionality of the browser. Okay, so a browser, generally we know that browser will be used to open the web pages. Okay, so at that time, so if the browser having plugins, so the plugins will extend the functionality of the browser. So how many so many browsers we have nowadays? Microsoft Edge is there, Google Chrome, Mozilla Firefox, so many. Okay, so now so plugins. So which type of plugins? These plugins designed to use for different purposes. These plugins designed used for different purposes. So actually, plugin is what? It is a computer program. Okay. So whenever you install that plugin, this a program means code. Behind of that code will be run. Okay. So don't feel that what is plugin. Plugin is nothing but it is a computer program. So whenever you install that plugin, some code will be run to extend the functionality of the browser. Okay. So let us see which type of plugins are there. So these plugins designed to run used for different purposes, to run Java applets, to run Microsoft ActiveX controls, to display Flash movies, to display maps, to scan for viruses, to verify a blank ID. These are all the purposes, different purposes. So these plugins will be used for these different purposes. Okay. That is the next warning. What do you mean of this? Most browsers they will not support for Java applets and plugins. Most browsers they will not support for long support for Java applets and plugins. ActiveX controls they are also not supported, no longer supported in any browsers. In modern browsers, support for Shockwave Flash it is also turned off. So here object element will be used. So object element that is used to support that is supported by all browsers. Object element. So this object, most of the browsers they will support this object element. So this element defines an embedded object within an HTML document. Okay, we can use this object element to define embedded object. So this element designed to embed plugins. Embed means to add plugins like Java applets, PDF, portable document format readers, and Flash players. So to embed plugins, we can use this object element to add any object in HTML document. So these plugins can be embedded by object element in web pages, but can also be used to include HTML in HTML. Okay. So in web pages, suppose if you want to add embed, if you want to embed plugins, we can use object element. थोड़ा हिंदी में भी बताऊंगा क्योंकि हिंदी वासी के स्टूडेंट्स के लिए. So शुरू से थोड़ा सा स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा हिंदी वासी के लिए. ये प्लगइन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स है. सो ये प्लगइन्स की मदद से ये ब्राउजर की क्षमता का काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं. सो प्लगइन्स आर
कुछ नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। जब भी प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे तो कुछ कोड रन होता है। सो वो कोड ब्राउजर की कार्य का क्षमता को बढ़ाता है। सो प्लगइन्स ये डिजाइन किया गया बहुत सारे काम, डिफरेंट काम के लिए, डिफरेंट मकसद के लिए ये बनाया गया है। वो मकसद क्या है? जावा एप्लेट्स को रन करना चाहता है तो आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करो। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव कंट्रोल को रन करना है तो प्लगइन्स को इंस्टॉल करो। डिस्प्ले फ्लैश मूवीज को रन करना है तो प्लगइन्स, मैप्स को रन करना है तो प्लगइन्स इंस्टॉल करो। वायरसेस को स्कैन करना है, ये ब्लैंक आईडी को वेरीफाई करना है तो प्लगइन्स को रन करो। हिंदी में, ठीक है। सो बहुत सारे ब्राउजर्स ये जावा एप्लेट्स को एंड प्लगइन्स को सपोर्ट नहीं करता है। एंड एक्टिवेक्स कंट्रोल्स को भी बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं। और शॉकवेव फ्लैश टर्न अप किया गया मॉडर्न ब्राउजर्स में। बट एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट होता है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर, सब ब्राउजर सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट एलिमेंट। ऑब्जेक्ट एलिमेंट को हम इस्तेमाल करके और ये प्लगइन्स को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड करना मतलब ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को एम्बेड करना, ऐड करना वेब पेज के अंदर। सो क्या क्या प्लगइन्स को हम एम्बेड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? इस ऑब्जेक्ट एलिमेंट की हेल्प लिए हुए हमने जावा एप्लेट्स को ऐड कर सकते हैं। पीडीएफ रीडर्स है, पीडीएफ का फुल फॉर्म मैंने बताया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। एंड फ्लैश प्लेयर्स वेब पेजेस के अंदर। और ये प्लगइन्स को और HTML को भी ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंक्लूड HTML इन HTML वेब पेज के अंदर HTML को इंक्लूड करने के लिए भी प्लगइन्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लासेस जैसे मैंने बताया हफ्ते में 3 बार चलते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। जून में फ्री क्लासेस हैं, शाम को 8 बजे चलते हैं। मोस्टली कोशिश करता हूँ 3 दिन चलाने के लिए। कभी मेरा पर्सनल कोई काम होता है तो तभी क्लास नहीं होता है, तब मैं मैसेज देता हूँ क्लास नहीं है बोल के। These classes are free classes. They will be conducted thrice a week, Friday, Saturday, Sunday, sharply 8 p.m. in Zoom. Whom are very desirous to attend the classes, they can attend the classes. शुरू में ये क्लासेस पूरा इंग्लिश में चलता था, मगर कुछ स्टूडेंट्स हिंदी भाषी वो इंग्लिश को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं तो मेरा क्लास में आके चले गए हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि उन लोग मेरे से बात करना चाहिए था। अगर क्लास में रहते हुए उन लोग बोलता तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा था, उनको मैं हेल्प करता, बट उन लोग मेरे से बगैर बात किए हुए चले गए। वो हो सकता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, शर्मा आते हुए न मेरे से बात नहीं कर पाए। फिर भी मेरा संदेश आपके लिए, जो भी स्टूडेंट्स नॉर्थ साइड के बच्चे हैं प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, उनके पास ज़्यादा महंगी महंगी कोर्स का फीस नहीं दे पाएंगे तो मेरा क्लासेस फ्री क्लासेस है ऑनलाइन में, हफ्ते में 3 बार चलता है। आप अटेंड कर सकते हैं। वैसे मेरा रिकॉर्डिंग वीडियोस भी यूट्यूब में रखे हुए हैं, चैनल का लिंक दिया हुआ है। वैसे मेरा नंबर में भी कॉल कर सकते हैं, 9110398650। ठीक है। तो जो भी क्लास में आते हैं तो आज भी आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो हिंदी में भी बता दूंगा, दोनों में, ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं। सो ये सिंटैक्स है। ऑब्जेक्ट एलिमेंट मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट एलिमेंट स्टार्टेड विथ start tag, this ended with end tag. Okay, and this is the width attribute and height attribute data here हमने ये दिया हुआ snippet डॉट html। डाटा इज एन एट्रीब्यूट, तो HTML को इंक्लूड करने के लिए हमारे वेब पेज के अंदर इसको कोशिश करके देखते हैं कोड कैसा होता है। Let us see how the code is written for this topic. As I told you this, initially we need to write doc type HTML started with exclamation mark,
and HTML. This is start tag, body tag. Inside of this object element started with start tag. Width is an attribute assigned with a value 100%. Height is an attribute assigned with 500 pixels. Data and object element closed. Body closed HTML. So what happened here? See. So now this is if you run this code, if you run this, what happened? Let us see what happened. So this is the what snippet. One snippet is run. Okay, the snippet. So this is what snippet of what HTML snippet. Okay, which is having some data. That's HTML snippet. If you want to add HTML data in your web page, so that moment you need to keep that HTML snippet, okay, details. So like this, we can add HTML, we can embed HTML inside of our web page. Okay. So now next come to that. So if you want to embed images, embed means add image. If you like कोई इमेज आपने डालना चाहते हैं, एम्बेड करना चाहते हैं, एम्बेड मतलब जोड़ना है, वेब पेज के अंदर आपने जोड़ना चाहते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट एलिमेंट, यूज ऑब्जेक्ट एलिमेंट with start tag. Data is attribute assigned with rd.jpeg. It is a picture. I told you that jpeg फुल फॉर्म क्या होता है? जाइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप. ओके, जो इमेजेस का एक्सटेंशन है डॉट. ओके, अगर मूवी टाइप है तो डॉट mp4, वीडियो है तो डॉट mp3 एक्सटेंशन है. और ऑब्जेक्ट क्लोज्ड है, उसको देखना चाहते हैं. ऑडियो के लिए आपने ऑडियो एलिमेंट जरूरत नहीं है, इधर ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. So this is the code. Now this is the you run the now that this JPEG what JPEG picture. If you want to add picture, if you want to change, you need to change this picture. Okay. Now come to that next. That is what next embed element. So just इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट एलिमेंट इस्तेमाल किया किस किस के लिए? किसी HTML स्निपेट को एम्बेड किया, ऐड किया, इमेज को ऐड किया ऑब्जेक्ट एलिमेंट की मदद से. सो एम्बेड एलिमेंट, ये एलिमेंट इट्स सपोर्ट इन ऑल मेजर ब्राउजर्स. सभी ब्राउजर्स इस एम्बेड एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं. एम्बेड एलिमेंट ये डिफाइन, ये क्या करता है? एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट. इन HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ये एम्बेड एलिमेंट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को ऐड करता है, डिफाइन करता है. So web browsers have supported the embed element for a long time. So all web browsers they will support embed element for a long time. जो भी है, मगर ये HTML5 स्पेसिफिकेशन से पहले ये सपोर्ट नहीं होता था. ओके, बिफोर HTML5 डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है. अभी लेटेस्ट ब्राउजर्स अभी इसको सपोर्ट करते हैं. एम्बेड इज, as I told you, that an element, src is attribute, or ad, it jpeg what? Image. If you run this, the code will looks like this. Code looks like this. Okay, same. Now, so embed element doesn't have a closing tag. Embed element, object element has the closing tag, but if you watch, अगर आप देखा तो embed element का close tag नहीं है, but object element को close tag है. Okay, object element closed with close tag. Next is what? Okay, next
cannot contain alternative text. So object element, embed element को अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं है। मत इनकेस अगर वो एम्बेड एलिमेंट किसी को रन नहीं कर पाया, किसी इमेज को, अदरवाइज HTML स्निपेट को एम्बेड ऐड नहीं कर पाया डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, उस समय अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा सकते हैं। बट हियर अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। एम्बेड एलिमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंक्लूड HTML इन HTML। सो HTML स्निपेट ऑब्जेक्ट एलिमेंट को लगा के हमने HTML स्निपेट को रन किया है, तो इधर भी हम कर सकते हैं एम्बेड, दिस इज द स्निपेट HTML, हाइट एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट है। बट HTML एम्बेड एलिमेंट अल्टरनेटिव टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट रन किया है, ये रन होता है, ये स्निपेट रन हुआ, HTML स्निपेट रन होता है, ओके। नेक्स्ट इसको देखते हैं।